Hi everyone, this is Dr. Mrinalini Sharma and welcome to our YouTube channel. Today we're doing a YouTube live after a long time and I've picked up a very interesting topic for today's YouTube live session, and that is with regards to a very popular procedure called breast reduction, जो हमसे बहुत सारे पेशेंट्स करवाते हैं एंड बहुत सारे पेशेंट्स इसके बारे में जानना चाहते हैं। एंड जब भी कोई ब्रेस्ट रिडक्शन के बारे में हमसे पूछता है, उनका सबसे कॉमन जो डाउट होता है, इनफैक्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन पीपल आस्क मी व्हेन दे थिंक ऑफ गेटिंग अ ब्रेस्ट रिडक्शन डन इज समहाउ दिस क्वेश्चन दैट ब्रेस्ट रिडक्शन के बाद कहीं ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस तो नहीं है। तो टुडे इन दिस यूट्यूब लाइव सेशन हम बेसिकली इस पॉपुलर मिथ को कि ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है आफ्टर ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी, इसको हम बस्ट करेंगे। सो बेसिकली वी गोइंग टू tell you how breast reduction impacts breast cancer, and how, contrary to popular belief, it actually has been shown to decrease the risk of breast cancer compared unless just putting the apprehension which people have in mind that this can cause breast cancer. Now, ब्रेस्ट रिडक्शन जो है, दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर सर्जरी एंड लोग इसके बारे में यूजुअली बहुत सोचते हैं कि कराएं ना कराएं। उसका मेन कारण होता है कि इनको पेशेंट्स को इससे डिस्कम्फर्ट बहुत होती है। सो लार्ज ब्रेस्ट साइज जैसे कि जी कप हो गया, ई कप हो गया, सम पीपल इवन कम टू मी विद एन आई कप, उनके जो लाइफ है, उनका जो लाइफ स्टाइल है इज़ वेरी बैडली अफेक्टेड बाय द लार्ज साइज ऑफ द ब्रेस्ट। एंड ये एक ऐसी प्लास्टिक सर्जरी है जो मैं आपको मतलब बताना चाहूँगी कि एक्चुअली कॉस्मेटिक सर्जरी भी नहीं कहलाई जाएगी। दिस इज समथिंग विच इज़ मोर ऑफ अ फंक्शनल प्रॉब्लम विच पीपल हैव। So any lady who's having big breast is really embarrassed by the fact that कॉस्मेटिकली एक तो देखने में अजीब लगते हैं। बहुत लेडीज मुझे आके कहते हैं कि वी ड्रॉ अनवांटेड अटेंशन। हम अपने वर्क प्लेस में जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वी गेटिंग अनवांटेड अटेंशन, अनकंफर्टेबल फील करते हैं, हम बहुत कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, हम अपने मनपसंद के कपड़े नहीं पहन पाते हैं बिकॉज वी फील ऑकवर्ड, वी फील एम्बेरस्ड बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज ब्रेस्ट साइज। एंड कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी जैसे रेस्ट्रेन आता है बिकॉज ऑफ द लार्ज ब्रेस्ट साइज। सो जैसे जिमिंग हो गई या कोई ऐसी एक्टिविटी हो गई जिसमें if you're running on a treadmill or if you're doing some kind of a cardio workout, तो उसमें भी many girls come and tell me that ma'am it's so embarrassing, हमें because of a large breast size we are practically not able to do whatever kind of physical exercise or physical activity we want to। तो ये functional problems भी बहुत रहती हैं। These are seen in young girls also। So बहुत सारे मेरे patients ऐसे हैं who are actually quite slim, they are within their normal body weight but they have huge breast size। So that becomes a very problematic condition for them, wherein they can't actually find clothes to fit into because बॉडी का साइज कुछ और है, ब्रेस्ट का साइज कुछ और है। एंड ऑल्सो बहुत सारी ऐसी फंक्शनल प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होने की वजह से होती हैं। सो लाइक पीपल विल से कि मेरे को बहुत नेक पेन हो रहा है, मेरे को बहुत शोल्डर पेन हो रहा है, मेरे रैशेस डेवलप हो जाती हैं, स्पेशली इन समर्स आपके ब्रेस्ट के नीचे रैशेस डेवलप हो सकती हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आपका जो ब्रेस्ट साइज है वो इतना बड़ा है कि वहाँ पे पसीना आता है, यू नॉट एबल टू मेंटेन हाइजीन। सो it becomes a very big functional problem for the woman also। So for these various reasons, आप cosmetic बोल के चल लें या functional बोल के चल लें या physical limitations बोल के चल लें, people want to get breast reduction done। But सबसे बड़ा डाउट जो लोगों के दिमाग में होता है जब वो इस सर्जरी के बारे में सोचते हैं, वो फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि क्योंकि ब्रेस्ट है तो कहीं छेड़ाखानी करने से ब्रेस्ट कैंसर ना हो जाए। ये आई थिंक ऑलमोस्ट आई वुड से 95% ऑफ पेशेंट मुझसे ये चीज़ पूछते होंगे कि इसके बाद ब्रेस्ट कैंसर के कोई चांसेस तो नहीं होते। तो इनफैक्ट मैं आज आपके इस वीडियो में आपको ये बताना चाहूँगी कि ब्रेस्ट रिडक्शन कराने से ब्रेस्ट कैंसर होना तो बिल्कुल ही अनहर्ड ऑफ है। ऐसा नहीं है कि आपने ब्रेस्ट रिडक्शन कराया किसी भी कारण से आपको उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर हुआ। ऑन द कॉन्ट्ररी, ये ज़रूर है, देयर आर स्टडीज विच शो दैट इफ़ यू वर टू रिड्यूस द ब्रेस्ट साइज, देन इन फैक्ट पीपल हैव कंडक्टेड स्टडीज में उन्होंने एक ऐसा ग्रुप लिया है ऑफ पेशेंट्स
जिनमें उन्होंने देखा है कि जो एक्सपेक्टेड चांस था ब्रेस्ट कैंसर का, उससे कहीं कम चांस है रिडक्शन के बाद, ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी के बाद ब्रेस्ट कैंसर होने का. सो इनफैक्ट what happens is the risk of getting a breast cancer has been found to be decreasing after a person has got a breast reduction, and especially if reduction जो है वो significant quantity में किया गया. वो कहते हैं अगर 500 ग्राम या 800 ग्राम से ज़्यादा का breast reduction per side है, so instead of increasing the chances of breast reduction, it has been found that the chances of breast reduction, in fact, get reduced in these women who have breast reduction surgery. So क्लिनिकली ये नहीं कहूँगी कि आप ब्रेस्ट रिडक्शन करा लेंगे तो ब्रेस्ट कैंसर के जो चांसेस है बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं, बट इनफैक्ट अगर आपका चांस था भी किसी रीज़न से ब्रेस्ट कैंसर होने का तो वो कम हो जाता है. सो it in fact has a beneficial effect on reducing the risk of breast cancer. So basically, I keep telling my patients that it is not a surgery which you should in fact consider as a cosmetic surgery. This is the kind of surgery where you are going to be having a lot of relief from your functional symptoms like neck pain, shoulder pain, inability to exercise, and all that once you get a breast reduction done. And if this fear that सर्जरी हुई है, मैनिपुलेशन हुई है ब्रेस्ट टिश्यूज की, जिसकी वजह से you can actually there's a increased risk of breast cancer, ये जो डर होता है, this is totally baseless. So there is absolutely no chance that you get a breast reduction surgery done today and later on after a few years you're going to have any chance of having a breast cancer because of the breast reduction. You might have a family history, you might have somebody in your family who's had a breast cancer, but उसमें भी इनफैक्ट अगर ऐसा कोई हिस्ट्री है भी तो ब्रेस्ट रिडक्शन कराने से आपके चांसेस कम ही होते हैं, ना कि बढ़ते हैं. इनफैक्ट इफ आई वांट टू टेल यू दिस, देन in patients who have a very high risk of breast cancer, जैसे किसी की फैमिली हिस्ट्री है, the mother had a breast cancer or the masi had a breast cancer, then there are certain genetic testings which are done जिसमें ये दिखाया जाता है कि आप में भी वो increased chance है कि नहीं. And in people who have an increased risk of breast cancer because of the genetics, so removing the breast prophylactically is in fact a known method of decreasing the risk of breast cancer. So obviously अगर हम breast tissue निकाल रहे हैं तो उसमें कैंसर होने के chances कम है. The opposite never happens that because we've done a breast reduction surgery, breast cancer की जो risk है वो बढ़ जाए. So this is something which I would really want to emphasize. हाँ, कुछ और कॉम्प्लिकेशंस हैं जो ब्रेस्ट रिडक्शन के बाद हो सकती हैं, दैट इज नॉर्मल. जैसे आपका अगर थोड़ा सा वुंड हीलिंग डिले हो जाए, या obviously one concern which the patient has is the scar जो आ सकता है, which is like any surgery might leave a scar. So in the same way breast reduction can also leave a scar. But beyond these normal sequelae, मैं इनको side effects भी नहीं बोलूँगी, this is how the surgery is planned. Other than the scar or other than some amount of initial, I would say, pain or discomfort, there is no real complication which happens because of a breast reduction surgery. Now people also ask me that, doctor, can I resume breastfeeding after my breast reduction surgery? So इसमें भी again there are many patients who come and tell me कि डॉक्टर हमने सुना है कि once we get a breast reduction done तो हमारा जो breastfeeding है वो possible ही नहीं है. So that again depends on a large extent as to how much of the breast tissue has been removed. So we never remove all the breast tissue, पूरा का पूरा breast नहीं निकालते हैं. We always leave behind some amount of breast tissue. इसलिए ऐसा नहीं होता that आपकी जो breast feeding है वो बहुत ज़्यादा affect हो. जो हम टेक्निक यूज़ करेंगे, especially if we know कि unmarried girl है या a woman who's yet to have children, इनके भी बच्चे नहीं हुए हैं, फैमिली वो प्लान कर रहे हैं, तो ऐसे में हमारा जो टेक्निक्स है ब्रेस्ट रिडक्शन को मद्देनजर रखते हुए की जाती है कि जहाँ तक हो सके आपका जो के जो चांसेस हैं वो इंटैक्ट रहे इवन आफ्टर योर रिडक्शन. सो ना ही कोई ऐसे इंक्रीज कैंसर का रिस्क होने वाला है, ना ही आपकी ब्रेस्ट फीडिंग है उसमें प्रॉब्लम आने वाली है, स्पेशली इफ यू आर गोइंग टू फॉलो द प्रॉपर टेक्निक्स. देन एक और चीज़ जो मुझसे लोग पूछते हैं वो ये होता है कि डॉक्टर जो आपका जो ब्रेस्ट का साइज है वो दोबारा इंक्रीज हो सकता है क्या? सो इन दैट आई वांट टू से दैट आपका जो ब्रेस्ट का साइज है
अनलेस कुछ बहुत मेजर हार्मोनल फ्लक्चुएशन हो, कुछ प्रॉब्लम हो, या आप बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लें, अनलाइकली है कि आपका ब्रेस्ट का साइज जो है वो दोबारा उस लेवल पे आएगा जहाँ से हमने इसको रिड्यूस किया। नॉट सेइंग दैट नो इंक्रीज इन साइज इज पॉसिबल, but if your lifestyle is okay, if you're keeping a watch on your weight and your weight gain is not excessive, then we should be expecting that आपका जो ऐसे breast जो हमने reduce किया है, that will not really further increase in size. हाँ, hormonal fluctuations हो सकती है. Suppose we do this surgery in a lady who's now pregnant, and she's breastfeeding her baby, तो उस टाइम एक increase in breast size definitely हो सकता है even after a breast reduction. And usually this increase in breast size जो है, this will go back to normal after the lady stops breastfeeding, and जब उनका वो फेस चला जाएगा, तो जो सारे जो hormonal changes हैं वो जब रिवर्ट हो जाएंगे, तो आपके जो breast size will go back to what it earlier was. So what I'm trying to emphasize is, as such, जो fears, concerns इस surgery को लेके हैं, most of them are uh, you know baseless. It doesn't cause any kind of very, I would say, big complications, or it does not cause any serious side effects. And obviously इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ patient factors भी हैं कि we'll ask you to, if you are a diabetic or a hypertensive, तो हम चाहेंगे कि आपकी वो सारी जो मेडिकल कंडीशन है वो वेल, आपके शुगर नॉर्मल आ चुकी हो, आपका ब्लड प्रेशर अगर है तो वो कंट्रोल हो चुका हो. If you're a smoker by any chance, then you should stop smoking before the surgery and continue to abstain from smoking for a period of at least 2 months after the surgery, so that healing जो है proper हो जाए. And also हम आपको बोलेंगे कि आप physical activities restrain करें, आप जिम थोड़ी देर के लिए अवॉइड करें, आप वेट लिफ्टिंग जो है वो अवॉइड करें. सो वो सारी प्रिकॉशंस ऑब्वियसली वी वांट यू टू फॉलो. बट अगर आप ये सारी प्रिकॉशंस फॉलो करते हैं, देन जो इट्स अ वेरी स्मूथ रिकवरी. इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द काइंड ऑफ सर्जरीज जहाँ बहुत ज़्यादा ऐसा रिकवरी टाइम नहीं है. It's not a very painful procedure, and most of my patients, they return to work almost, I would say, within 10 days of getting this procedure done. हाँ, बहुत large reduction है, थोड़ा time ले सकता है, but within 10 days usually most of my patients, they can return to their workplace. And अगर आपका sitting job है, अगर आप का जो activity is mostly, like many people have an online schedule these days, or work from home kind of a schedule these days, that can be resumed even earlier. सो फॉलोअप्स होते रहते हैं. कुछ ड्रेसिंग्स के लिए हम आपको बुलाएंगे, स्टिचेस हैं विच might be absorbable and some might need to be removed. But most of the recovery is that kinds where you can still carry on your routine work, and ऐसा नहीं है something which requires bed rest or something which requires a very long break from your work. So overall, I would say that this is a very smooth recovery, and it is not really that painful or that problematic as the patient usually imagines it to be. कुछ सिम्टम्स के जो रिलीफ है वो बहुत जल्दी आते हैं, जैसे नेक पेन का रिलीफ या आपके सर्वाइकल का जो पेन का रिलीफ है वो काफ़ी जल्दी आ जाता है आफ्टर अ ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी. जो बाकी के सिम्टम्स हैं कि साइज बड़ा है, वो थोड़ा फिर एज द टाइम पासेस ऑन, आपके जो स्वेलिंग वगैरह रिड्यूस होने के बाद जो है वो और आपका जो है साइज रिड्यूस होगा. सो दैट थिंग इज देयर दैट द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ द सर्जरी माइट टेक some time to show, because after all the swelling has gone. But in terms of the amount of rest required or the break from work required, it is not that kind of a procedure जहाँ आपको बहुत लंबा चौड़ा break चाहिए. So it's a very comfortable procedure. So I would basically wind up this session by telling you that all of these procedures regarding which are done as a part of breast reduction surgery are very very safe, and you should have no anxiety in your mind that they can lead to any kind of cancer later on. And again, reiterating what I had said earlier during this session, that in fact, studies have shown that instead of increasing the risk of breast cancer, any kind of breast reduction, especially अगर हम अच्छा खासा tissue निकालते हैं, say some people have a reduction of almost, we've also done reductions of almost 800 grams to 1 kg per size, जिसमें हम large reductions करते हैं, उनमें the breast cancer risk in fact might decrease after a breast reduction surgery. So
I hope you've understood this message which I wanted to convey during this session today. And if you have any further queries regarding this particular procedure or any of our plastic surgery procedures, please feel free to reach out to us, and do subscribe to our channel. And we'll be now following up regularly with more such interesting topics. And if you want to suggest any topic which we should cover in our session, uh, please, you can just drop your comments in the section below, and we'll definitely take up those topics in the next live session. Thank you so much for joining me today, and have a nice day.